because this is going to be an interactive session. So I request everyone, and very, very good morning and welcome. Thank you for being here. Okay, I think before people join in, we can also take some sharings in the sense, आप में से किसने कल का homework किया? आप में से ओके, सबसे पहले सब अपनी वीडियोस ऑन कर लेते हैं so that मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ. I think the students will join us at 8:20, so we have 5 minutes. Very good morning. Good morning. Okay, so thank you, Akish ji, for turning on your video. Very good morning and welcome. Good morning. आपका नाम नहीं मुझे पता चल रहा, गुरु गार्मेंट्स के नाम से दिख रहा है. So good morning and welcome. Good morning, Pragati ji. Good morning, Rahul ji. Good morning, ma'am. Very, very good morning. Thank you. Very good morning. Good morning. Good to see you. Yes, okay. So now before we start with today's session, कल हम लोगों ने day 0 पे complete किया था. We entered into the introduction of what is this magic journey all about. ठीक है? I hope आप सब लोगों के पास इस book की PDF है या फिर you have the hard copy of it. क्योंकि it will be easier for you to एक चीज जो इसमें लिखी है practice करना. 1 second. Yes. Okay. Very good morning. Nice. So we have people joining in. I get that. So we will not start the session yet, but let's have some sharing. So आप में से किसने कल Secret movie देखी? You saw the Secret movie, whether in Hindi or in English. You saw it. Okay. Pragati ji, आपने देखी? Ma'am, not entire, but up to 45 minutes, I am able to watch the movie. So what were your takeaways from the movie? क्या सीखा आपने उससे? Ma'am, main thing is we need to think always positively because what we think come back to us. Okay. That was the. All right. Very good. And we should experience what we want. We have to experience that thing first. Okay. All right. बहुत अच्छे. Good. Thank you, Pragati ji, for sharing. Yes. और किसने Secret movie देखी and what were your takeaways? Oh wow, we have a lot of young students. 1 second, let me spotlight it to see. Very nice. Good. Good to see you. Very good morning. Very, very good morning. Good. Thank you for being here. What all age group do we have, Garima ji, in the sessions? Like what all, किस class के students attend here? Class 3 onwards, so 3 to 12. Wonderful. Very, very nice. Thank you. Thank you so much. Good. So I hope सारे students जो हैं, आप सब लोग अपनी notebook और pen के साथ बैठे हैं. आपने अपनी notebook और pen बाहर निकाली हुई है. Because हम आज के जैसे कल हमारे को एक assignment, students में से किसने कल का assignment किया? आप में से किसने कल Secret movie देखी? Just raise your hand if you saw. Okay, nobody saw. Very nice. So then we'll keep a session for the movie also, है ना? Otherwise तो कोई नहीं करने वाला. Very good. बहुत अच्छे. Okay. Yes. Anyone else? Rashmi ji. So किसको? So my request to everyone will be that for the maximum participation, ठीक है? The key is not in just attending the session. आपको मजा उसमें आएगा जब आप assignments करेंगे, ठीक है? So today we will be completing the introductory chapter and then
we will be starting on with the daily gratitude assignments that this book will be telling us, जो कि हम use करेंगे to make our dreams come true, आपके जो सपने हैं. So, Garima ji, whenever you say, we'll start with the session. I don't know if the students are there or if we should wait for a little while. I think we can start. We can start? Okay, thank you. All right, so yesterday हमने topics जो cover किए थे, we talked about कि इस book में क्या-क्या curriculum होगा, क्या-क्या चीजें हम cover करेंगे. फिर उसके बाद हमने cover किया था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये कोई एक person या दो person की बनाई हुई चीज नहीं है. This is universal law that we are understanding and जिसको हम use करेंगे for our नहीं मेरे, ठीक है, मेरे सपने and मेरे सपनों को सच करना. तो चलिए, let's continue. And from the next chapter onwards, just see if we can also have interaction with the students so that I have to mute it. So that मतलब you know assignments के तौर पे अभी तक तो कोई assignment ऐसे book ने नहीं दिया है, but then जैसे आगे chapter 1, chapter 2, chapter 3 आएगा, तो I would also love to hear from the students that you know वो इस assignment को उन्होंने कैसे किया, कैसे practice कर रहे हैं, ताकि अगर मुझे कुछ उसके ऊपर feedback देना होगा कि ऐसे नहीं आप इसको ऐसे करो, या मेरे को उनसे कुछ सीखना होगा कि अरे वाह ये तो आपने बहुत अच्छे से practice किया, तो that will be much more beneficial. ठीक है. So I think जिस way से अभी students हमारे साथ joined in हैं, using the same medium for them to share also, so that they're not just listening, it's an interactive thing. So आप उसको एक बार please देख लीजिए. Okay, so let's continue. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. Yes, so यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था. ठीक है, अब आगे करते हैं. The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of the humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries. Sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. So it doesn't matter, ठीक है, कि आप कृष्ण जी को पूछते हो या गुरु नानक देव जी को पूछते हो या इस्लाम की टीचिंग्स को मानते हो या बुद्धिस्ट हो या किसी पर्टिकुलर कल्ट को मानते हो, whatever it is, या नहीं भी मानते. See, हमें क्या होता है, हमें लगता है, जिससे हम लोगों को फीड किया जाता है ना कि ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है. But when you look at the essence of everything that they're trying to teach, they are talking about gratitude at the core. हाँ, उनके हो सकता है बात करने का ढंग थोड़ा अलग हो, मगर the message that they're trying to convey is to practice gratitude. ठीक है, अभी जैसे हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे लाओ सू जो है, उनका क्या कहना है, कृष्ण जी जो है, what is he saying, है ना, तो उस तरीके से जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिन्होंने इस्लाम को स्टार्ट किया, उनका क्या कहना है. So all of them were talking about the same thing, because of which it all started. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living.
If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. आप में से कौन कौन बी ऑनेस्ट, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आप हो सकता है ये मैजिक बुक 10 बार पहले कर चुके हैं या हो सकता है आज आप पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं. आप में से कौन कौन सच्ची सच्ची बताना, आज सुबह उठा और आपने बेड पे जब आप बैठे थे, आप में से किस किस ने कहा कि अरे यार थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच मेरे इतने वंडरफुल दिन के लिए, मैं आज एक नए, आपने मुझे एक नया दिन दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मेरे सर के ऊपर एक छत है, घर है, पंखा है, एसी है, बेडशीट है, पिलो है, उसका थैंक यू. किस किस ने, आपने आज, अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं मोटा मोटा, है ना. आप में से किस किस ने अभी तक के दिन में किसी भी प्रकार का ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया, yes or no? You don't have to, lie. You don't have to tell anybody. Just really, honestly answer this for yourself. किया? नहीं किया? किया तो बहुत बढ़िया. और अगर नहीं किया, नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप स्कूल गए, हो सकता है यार बस फिर से लेट हो गई, यार शिट यार फिर से लेट हो गया मैं, यार अभी फिर से बैठना पड़ेगा और 1 घंटा इन दीदी को सुनना पड़ेगा, क्या करता रहता है मेरा स्कूल, मेरा पता नहीं कैसे कैसे, यार कैसे बिठा दिया है, मतलब मुझे नहीं पता, है ना. पर अगर आपको अभी इस पॉइंट पे, इफ यू सी नो रीजन फॉर गिविंग थैंक्स, द फॉल्ट लाइज विद योरसेल्फ. बाहरी सिचुएशंस में कोई कमी नहीं है. हाँ ठीक है, हमें मिसिंग है, अभी हम नहीं कर रहे हैं इस प्रैक्टिस को, कोई नहीं. आज हम एटलीस्ट आप बैठे तो हो, एटलीस्ट आप सुन तो रहे हो, एटलीस्ट कहते हैं ना आप पहला कदम तो ले रहे हो कि चलो ठीक है करके देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है. चलिए. These words are from Shawnee Native American leader Tecumseh. History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. If you actually look at this, all जो यहाँ पे नाम लिखे हैं, these people are जिनको हो सकता है गुजरे हुए इतना समय हो गया, मगर ये लोग अपनी फील्ड के इतने ज्यादा बड़े पायनियर्स थे कि आज की डेट में भी when you, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर कंट्री के इंडिपेंडेंस, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, इंडिया में आता है गांधी एंड एफ्रो अमेरिकन में आता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना. आप पेंटिंग का नाम सुनते हो, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, मोनालिसा, उसका पेंटर कौन था, लियोनार्डो डा विंची. आप साइंटिस्ट सोचते तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, हाँ एक इंसान था जिसके ग्रे कलर के बाल थे, ऐसे बाल खड़े खड़े रहते थे, आइंस्टाइन. यस नो. मतलब उन लोगों ने, अब आप लिटरेचर की बात करते हो, लिटरेचर, उसके बाद ना जाने कितने लाखों करोड़ों राइटर्स आए, लिटरेचर, शेक्सपियर. मतलब उन लोगों ने अपनी फील्ड में इतना कुछ कमाल कर दिया, इतना कुछ रिमार्केबल छोड़ के चले गए कि उनके गए हुए इतने साल चले गए, बट स्टिल दे आर एटर्नल. क्यों? We need to understand. See, आज जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऐवे ही नहीं बैठे कि चलो होमरूम पीरियड था, मैम ने बोला था, चलो बैठ जाते हैं, चलो सुन लेंगे. नहीं. This is an opportunity for you to create that wonderful magic in your life. Not your mother's life, or not your teacher's life, or not your friend's life who's sitting next to you. No. कि यार इन लोगों ने ऐसी क्या चीज की थी कि ये कहां से कहां पहुंच गए, है ना. एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉमन अमंगस्ट ऑल ऑफ देम. हाँ फील्ड, चलो किसी की फिजिक्स थी, किसी की लिटरेचर थी, किसी की कुछ थी, किसी की रेवोल्यूशन थी, किसी की जो भी थी, बट फील्ड्स अलग अलग थी, मगर कहते हैं ना उनके बीच का नेचर समथिंग वाज सिमिलर. एंड नाउ जो जिस जर्नी पे आप और मैं अभी हम शुरू कर रहे हैं is about not just understanding but practicing what these guys did. So अगर आप भी कहते हैं ना मैं अपनी लाइफ में कुछ छाप छोड़ के जाना चाहता हूँ, चलो सीखते हैं, है ना. जिन लोगों ने कुछ कर दिखाया उनसे सीख लेते हैं.
Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to the others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yeah. Like this is saying, है ना, आइंस्टाइन का उन्होंने पूछा कि जैसे होता नहीं है कोई बहुत मुकाम पे पहुंच जाता है, जिस भी फील्ड में आप जाओ, है ना, कोई टॉप करता है तो आप पूछते नहीं हो कि यार आपने इतना कमाल कर कैसे दिखाया, मगर है ना, जैसे आपके अगर स्कूल में कोई टॉप करता है तो आप पूछते हो ना कि यार कैसे किया, कोई बिजनेसमैन है जो उसमें टॉप है तो पूछते नहीं कैसे किया। उसी तरीके से इनसे भी पूछा गया कि यार आपने इतनी कमाल कमाल की डिस्कवरीज कर दी which completely changed the way we knew of science, so how did you do it, what was your base? They simply said, जैसे अभी हमने पढ़ा, एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, अरे मेरे को दिन में अपने आप को 100 बार याद दिलाना पड़ता था। I had to remind myself to be grateful for all that I have been given in my life, जो मेरी internal life, external life को चला रहा है। I had to remind myself, क्योंकि हमने कल क्या लाइन पढ़ी थी? Whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken away from him or her. पढ़ी थी ना हमने ये कल लाइन। आइंस्टाइन सिंपल ये कह रहा है, क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, कोई इंसान अपनी फील्ड में इतना टॉप कर रहा है तो घमंड आना तो नेचुरल सी बात है ना। हमारे किसी पेपर में 90 आ जाते हैं, जो पहले 70 आते हैं, अंदर से आ नहीं जाता, ओहो देखो मैंने कर दिखाया, ओ लुक व्हाट आई हैव डन। जो भी स्क्रीन पर ड्राइंग कर रहे हैं मत करो यार, थैंक्स। सो अंदर से यू नो वी गेट दिस काइंड ऑफ, आइंस्टाइन सिंपली सेड कि यार आई हैड टू जानबूझ के रिमाइंड माई सेल्फ, है ना। इवन आइजैक न्यूटन ही सेड, ओ नो यार मैंने तो डिस्कवरी इसलिए कर पाया बिकॉज आई स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स who did all these discoveries before me. Only because of them I was able to do all that I was, did. उन्हें कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिसको हमारे बड़े लोग, है ना, आपके दादा दादी, मम्मी पापा, टीचर्स, या सुना होगा, अरे बेटा खुश रहा करो, अरे बेटा ग्रेटफुल रहा करो, अरे बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस पर अच्छा ढूंढो। किस किसने ये बातें पहले सुनी है? जस्ट रेज योर हैंड, है ना। अरे आई हैव हर्ड ऑफ दिस, या आई हैव हर्ड ऑफ दिस, yes, just raise your hand. कमाल की बात है, we've heard of this as a concept, right? मगर इसके थ्रू हमारी लाइफ में जो मैजिक्स कहते हैं ना, मतलब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो सिर्फ तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ जान लेने से, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा लेने से जीरो फर्क पड़ेगा, जीरो। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज आपका यहाँ पे डे मतलब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी, मैं आपको पहले बता रही हूँ, आप असाइनमेंट नहीं करोगे मैजिक्स नहीं आने वाले। आप असाइनमेंट करोगे, आप मेरे पास 7 days या 10 days में आगे बोलोगे दीदी कमाल हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता। इट्स अप टू यू एंड योर पार्टिसिपेशन। चलिए। My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I'm a grateful person. I say thank you whenever I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is,
I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasions certainly did not make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt, and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed as healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with my friends or when I went on a vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt-free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. So ये ना अभी रोंडा बायन अपना शेयर कर रही है. वो अपनी लाइफ का एक तरीके से कहते हैं ना बिफोर एंड आफ्टर बता रही है कि मतलब पहले जो मेरी लाइफ थी उसमें कैसे था. उन्होंने अपने फाइनेंसेस के बारे में बताया कि अच्छा पहले जो मेरे फाइनेंसेस थे उसके अंदर मेरे ऊपर लोन भी चढ़ा हुआ था, डेट भी था, उसको पे करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती थी. तो वो इस तरीके से बता रही थी, मतलब लाइफ चल रही थी, है ना. फैमिली के लिए अच्छा टाइम नहीं है, हर समय दिमाग में कुछ चली जा रहा है. दिखने में मैं ठीक ठाक थी, वो नहीं था, बट कहते ना दिन के बाद जब सोने जाओ तो लगता है यार सो जाए यार, थकावट हो रही है. आप अपनी लाइफ में देखो अभी, है ना. उसकी लाइफ अभी हो सकता है थोड़ी बड़ी है, आप बच्चे स्कूल में हो. आप अपनी लाइफ में देखो, मैं अपनी लाइफ देख सकती हूँ, है ना, कि आप जैसे होता नहीं है कैसी चल रही है लाइफ, कहते हैं ना यार बस कट रही है यार, है ना, बस कट रही है, बस चल रहा है ना. जैसे कि हो सकता है मे बी राइट मे बी रॉन्ग, एनीबडी आस्क्स यू हाँ यार स्कूल जाता हूँ यार, एग्जाम्स भी करता हूँ यार, पढ़ाई करता हूँ, आधी चीजें समझ में आती हैं, आधी चीजें समझ में नहीं आती हैं, पता ही नहीं है लाइफ किस डायरेक्शन में चल रही है, बस कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ. कभी कभार मम्मी के साथ झगड़ा भी हो जाता है तो फिर और ज्यादा अपसेट हो जाता हूँ, समझ में ही नहीं आता है क्या करूँ. फ्रेंड्स के साथ कभी कभार बहुत अच्छा चलता है, कभी कभार फ्रेंड्स ऐसे फील करते हैं कि मेरे को बहुत ही सैड फील होता है ना. आप अपनी लाइफ में देखो, अपने डिफरेंट एरियाज को देखो कि आपकी लाइफ में अभी आपकी पढ़ाइयाँ, आपके को करिकुलर्स, आप जो स्पोर्ट्स खेलते हो, आपका अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ट्यूटर्स के साथ अभी रिलेशनशिप कैसा चल रहा है. क्योंकि जैसा भी चल रहा है इस प्रैक्टिस के थ्रू, जैसे इन्होंने बाद में शेयर किया ना कि देन आई डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ लाइफ and I started to do gratitude practice every day. I discovered the secret of life when I started doing gratitude practice every day, and then everything changed. ये अपना शेयर कर रही है, मैं अपनी लाइफ से शेयर करूंगी. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल जो इस क्लास में है, जिन्होंने पहले मैजिक बुक करी है,
just like magic, you will start to see these miraculous differences. जैसे इन्होंने बाद में बोला, out of nowhere, जितना पैसा मुझे चाहिए था वो खुद ब खुद आने लग गया. जो इतने सालों से मेरे पास स्कैर्सिटी में था, खुद ब खुद पैसे आने शुरू हो गए. रिलेशनशिप्स में पहले कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी अच्छे जा रहे हैं, कभी अच्छा रिलेशनशिप है, परसों झगड़ा हो गया, आज वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कल वो मेरे को ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं. नहीं, नॉट स्विंगिंग लाइक अ पेंडुलम एनीमोर. नो, आज रिस्पेक्ट मिल रही है, कल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आज हंस रहे हैं, कल रो रहे हैं. नहीं, she said now the quality of my relationships really became strong and my life became truly magical. And end में आपने देखा होगा, यहाँ पे एक लाइन आई थी, gratitude changed me and my whole life magically changed. I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. आप में से कौन-कौन अपनी लाइफ में ऐसी स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं कि यार लाइफ में जो भी चल रहा है, अच्छा अप्स डाउन्स, जस्ट रेज योर हैंड. आप में से कौन-कौन स्टूडेंट्स को लग रहा है मैं उनको देख नहीं रही हूँ, मेरी नजरें आप ही के ऊपर है जो नीचे बैठे हुए हैं. हाँ, आप में से किस किस को चाहिए अपनी लाइफ में ये? यस, नो, नहीं चाहिए तो हम ये बुक भी क्यों पढ़ रहे हैं? यस, दिस ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद द मास्क, ब्लैक मास्क, व्हाइट मास्क. Just raise your hand if you really want. Okay, I'll spotlight it. 1 second. Can you hear me? अच्छा, अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? Just raise your hand. समझ में आ रहा है ताकि मुझे भी पता चले. Okay, ठीक है. Okay, you are understanding. पहले मैं बाकियों से भी पूछ लेती हूँ, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, तो वो तो अच्छी फीलिंग नहीं है ना? Okay. ठीक है. So good. I'm glad. Let's 1 second. Good. Let's continue. More than anything else, I felt happier when I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Bring the magic into your life. अभी तक आपने इनकी कहानियां सुनी, मेरी कहानियां सुनी, अब आपके बारे में बात करते हैं कि आप इसे अपनी लाइफ में देखो. लेट्स बी ऑनेस्ट, आप यहाँ पे मुझे सुनने नहीं आए हो, आप यहाँ पे जिस मैम ने आपको इंट्रोड्यूस किया उनकी वजह से नहीं आए हो. अगर आप यहाँ पे एक शब्द भी सुन रहे हो, एक होता है मैं सिर्फ फिजिकली बैठा और मेरा दिमाग कहीं और है, नहीं, मगर अगर आप जहां बैठे हो, सुन रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, इज बिकॉज अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ में इसको लाना चाहते हो, है ना? आप सचमुच चाहते हो कि यार मैं अपनी लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूं ताकि मैं अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकूं. तो इस वाले टॉपिक में हम ये कवर करेंगे कि आप अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. या आप लड़का हो, लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रिंसिपल मैम हो, पेरेंट हो, कोई बिजनेस में हो, पढ़े लिखे हो, नहीं हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, न्यूयॉर्क में हो, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है जैसा आप चाहते हो, या फिर हो सकता है आप अपनी लाइफ की ऐसी स्टेज पे हो जहां पे आप you've given up, ये ना कि इसके आगे का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार कि क्या करूं, बहुत ही सफोकेटिंग वाली फीलिंग आ रही है. irrespective, the magic of gratitude will change your entire life. यहाँ पे आप एक एक शब्द पे हम ध्यान देंगे. entire life, ये नहीं कि सिर्फ एक ही एरिया में, नहीं, every area of your life, entire life. चलो देखते हैं कैसे. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful,
and fulfilling lives. अगर आपने कल सीक्रेट मूवी देखी होती तो आपको इसके एग्जाम्पल्स भी दिखते, वरना आप जिसने नहीं देखी आप आज देखिएगा. मतलब ऐसी चीजें जहाँ पे डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, है ना. ये मैं अपनी लाइफ में, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में, मम्मी पापा दादू हेल्थ में तो बहुत देखा है, जहाँ पे डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इस बीमारी के साथ तो अब आपको जिंदगी भर रहना पड़ेगा. वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं. ऐसे रिश्ते जहाँ पे कहते हैं ना होप गिवन अप हो जाती है, यार इसका कुछ नहीं हो सकता, है ना. कभी कभार फ्रेंड्स के साथ ऐसा लगता है ना, यार इस फ्रेंड्स के साथ बस मेरा रिलेशनशिप यही तक था, आगे हमारी दोस्ती नहीं होगी. या मम्मी पापा के साथ हो जाता है, अरे मेरी मम्मी ये बात नहीं समझेंगी यार, आई हैव गिवन अप ऑन दिस टॉपिक विद हर, है ना. अरे ये टीचर और मेरी हेल्प कर दे, अरे कहाँ हेल्प करेगी, गिवन अप. उन रिलेशनशिप्स के अंदर इतनी ज्यादा कहते हैं ना मैजिकली अंडरस्टैंडिंग एंड मजा आ जाता है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे. ऐसे लोग जिनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही डाउन पे होती है, दे ब्लूम. I've seen it happen. I've seen, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं. अच्छा, जो यहाँ पे अभी कॉल पे बैठे हैं, जिन्होंने मैजिक बुक पहले प्रैक्टिस करी है, just write down yes. अगर आपने, so on this call, apart from the Presidency School, we also invited some other guests जिन्होंने मैजिक बुक एक बार पहले कभी करी हो. Anybody like that on the call? So yeah, just share आपने अपनी लाइफ में कहाँ पे मैजिक्स एक्सपीरियंस किए. If anybody like that on the call, just write down the areas in which you experienced magic, like money, relationship, health, career, with your child, whatever, so that okay, you got admission in your dream college. Very good, Siddhi. Rashmi ji got in the area of money. Very nice. Guru Garments in the area of relationship. बहुत अच्छे. Yeah, relationship with your daughter. Very nice. Vishal ji got in the area of money and health. बहुत बढ़िया. So yeah, आप अपने लिए तैयार हो, हमें उनसे क्या मतलब, है ना. हमें तो अपनी लाइफ में मैजिक चाहिए. चलो. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. Very important. I'm sorry. Is everybody okay with me pausing and explaining? Because I don't want any single part of this to be missed. यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. जो भी आप पाना चाहते हो, बनना चाहते हो या करना चाहते हो, जो भी आज कल परसों, उसको अपनी लाइफ में पाने का रास्ता आपको ग्रैटिट्यूड से मिलेगा. एंड कमाल की बात है, जब आप इस पूरी प्रैक्टिस को करोगे द वे इट इज डिजाइन, यू विल स्टार्ट टू सी कि अगर आज आपकी लाइफ में कोई चीज खराब चल रही है या वैसी नहीं चल रही जैसा आप चाहते हैं, वो भी आप ही की सर्टेन प्रैक्टिस या सर्टेन रिस्क की वजह से है. अगर आप एक्स चीज चाहते थे और वो एक्स चीज आपकी लाइफ में नहीं है, तो क्यों नहीं है? You will start to see where your वरना नॉर्मली हम लोग लाइफ कैसे जीते हैं, अरे यार नहीं हुआ, अरे यार करना था नहीं हुआ, है ना. we tend to think कि anything outside of us is running our life. Yes, no. हमें क्या लगता है कि मेरी लाइफ मैं नहीं चलाता, मेरी लाइफ सिचुएशंस चलाती हैं, मम्मी चलाती हैं, पापा चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं, है ना. Yes, no. किस किस को ऐसे एक्सपीरियंस होता है? But once you start doing this practice, you will actually see, मैं अभी सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सचमुच, कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है और जो भी नहीं चल रहा है वो आपकी वजह से है. And once you get that, तो आप उसके बारे में कुछ कर भी सकते हो, है ना. You can fix it. तो चलिए. To make gratitude a way of life,
You will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may still come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. So pause. सब लोग अपना pen and paper लेंगे. Everybody take your pen and paper and on a fresh paper write down these areas in your life. है ना? जैसे सबसे पहले आप लिखो education, है ना? सबसे पहले लिखो पढ़ाई, education. फिर उसके बाद सेकंड में लिखो आपके जो को-करिकुलर्स आप करते हो, स्पोर्ट्स हो गया या कोई आप डिबेटिंग में हो या ड्रामा सोसाइटी जिसमें भी हो. फिर उसके बाद थर्ड एरिया में लिखो, थर्ड में लिखो रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स. ये अभी मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. जो एडल्ट्स हैं आप अपनी लाइफ के एरियाज लिख सकते हैं, आपके कुछ और भी हो सकते हैं ना, तो आप वैसे लिखिए. रिलेशनशिप विद पेरेंट्स हो गया, फिर आप रिलेशनशिप विद टीचर्स लिख सकते हैं, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स लिख सकते हैं, आप वेकेशंस लिख सकते हैं, आपके जो जो मनपसंद एरियाज है ना. वेकेशंस लिख सकते हैं आप, हेल्थ लिख सकते हैं, आपकी हेल्थ फिजिकली, एक्टिवनेस वाइज, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सारे एरियाज लिखे. अब इसके अंदर मोटा मोटा आपने क्या देखना है, इसमें से जो जो एरियाज आपके वैसे चल रहे हैं द वे यू वांट देम टू बी, उस पे यस लिख दो. एंड जो एरियाज अभी वैसे नहीं चल रहे द वे यू वांट देम टू बी, उस पे क्रॉस लगा दो. उससे क्या होगा, आपको ना कहते हैं ना अपनी रिपोर्ट कार्ड दिख जाएगी. आपको अभी अपनी लाइफ की रिपोर्ट कार्ड दिख जाएगी कि आपने अभी तक जिस जिस एरिया में ग्रेटिट्यूड किया होगा ना, वो एरिया बहुत बढ़िया चल रहा होगा. और अगर कहीं पे भी अभी आपके कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हैं, आपको कहते हैं ना उसमें स्कोप दिख जाएगा प्रैक्टिस करने का, कि अच्छा इस एरिया में भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ. ठीक है, तो आप अपने लिए सेल्फ में या अपनी रिपोर्ट कार्ड रेडी कीजिएगा कि आपकी लाइफ में आप कहाँ कहाँ पे से और प्रैक्टिस. It is a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you're not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of ungratefulness is that when we were not grateful, we are taking. We are taking things in life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. हाँ जी, ठीक है जी. सो हमें नॉर्मली अगर हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो हम क्या होते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे होते हैं. अगर मम्मी ने आज आपके लिए लंच पैक किया, आप लंच लेके आए हो, आपने मम्मी को उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड नहीं दिया कि थैंक यू मम्मी आपने मुझे लंच पैक किया, तो ऑब्वियसली यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. या तो ग्रेटिट्यूड है या टेकन फॉर ग्रांटेड. एंड अगर कोई चीज टेकन फॉर ग्रांटेड है तो वो अनग्रेटफुलनेस की कैटेगरी में ही आ जाएगा. एंड दैट मीन्स उस एरिया में आपके पास कभी भी अबंडेंस नहीं आने वाली है, वो चीज कम कम.
अगर आज मम्मी ने आपके लिए सुबह राजमा चावल बनाए थे, आपने उनको कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है, हो सकता है कभी कभार हम क्या करते हैं, यार मम्मी कैसे राजमा चावल डाल दिए थे यार, पूरे टिफिन से बाहर गिर गए, कितना गंदा हो गया, मैं कैसे करूं। हम कभी कभार क्या करते हैं, थैंक यू बोलने की बजाय कंप्लेन कर देते हैं। तो चलो माना वो मम्मी है, बट सोचो ना उनको भी कैसे लगेगा, यार छोड़ परे यार, क्या राजमा चावल सुबह सुबह बनाऊं, मैं परोठा ही डाल दूं। तो क्या हुआ, whoever does not have gratitude, even what he has will be taken away. तो क्या हुआ, आप राजमा चावल से आप पराठे पे आ गए, उसके बाद क्या हो सकता है, पराठे के बाद आप सैंडविच पे आ जाओ, उसके बाद सी दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये अभी हम आराम से अगले 30 दिन अपनी अपनी लाइफ में देखेंगे कि कैसे हम या तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं चीजों का जिससे वो चीज में बहुत मजा आ रहा है, या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं जिससे वो चीज में बैंड बजी जा रही है। चलिए फॉर्मूला जानते हैं। The magic formula. Ibn Khaldun al-Muqaddimah, who was a scholar and a statesman, he has said, knowledge is the treasure, but practice is the key to it. Ancient आप में myth, से किस किस ने एक स्टोरी सुनी है अलादीन की? अलादीन नहीं, नॉट अलादीन, जो 40 चोर, व्हाट वाज हिज नेम, अली बाबा, सॉरी अली बाबा, अली बाबा और 40 चोर, है ना। देयर इज द स्टोरी वेयर अली बाबा गोज एंड उसके पास एक बहुत बड़ा ट्रेजर होता है। तो इमेजिन कीजिए आप अली बाबा हैं, ठीक है, आप अली बाबा हैं एंड आपके सामने बहुत बड़ा खजाना है ना, उसके अंदर देयर इज गोल्ड, देयर इज डायमंड्स, देयर इज कॉइन्स, देयर इज वेल्थ, देयर इज रिचेस, देयर इज जो भी आप सोच सकते हो, आपका ड्रीम हाउस, आपका ड्रीम गाड़ी, आपकी ड्रीम जॉब, आपकी रिस्पेक्ट, आपके लविंग रिलेशनशिप्स, आपकी कमाल की सेहत, आप जो सोच सकते हो वो सब कुछ उस खजाने के अंदर है। मगर अभी आप कहते हैं ना, आप अभी दरवाजे के बाहर खड़े हो, खिड़की है, आप देख पा रहे हो कि हाँ वहां पे खजाना पड़ा हुआ है, मगर अभी आपके पास ना चाबी नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करो, आपको दिख रहा है चीज पड़ी है, बट वो आप कहते हैं ना, वो आपकी लाइफ में आएगी नहीं, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। कब तक? जब तक आपके पास चाबी नहीं होगी। और चाबी, कमाल की बात है, ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसकी चाबी सिर्फ आप बना सकते हो। आपके खजानों की चाबी सिर्फ आप बना सकते हो, आपके मम्मी पापा, भाई, टीचर, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, दादी, दादू, कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता आपकी चाबी। इंटरेस्टिंग, राइट? एंड ऑल ऑफ दैट इज लाइंग देयर फॉर यू। तो कहते हैं ना, यार थोड़ी अक्ल लगा के थोड़ी सी मेहनत कर ले चाबी बनाने में, क्या करना है, प्रैक्टिस ही तो करनी है। सो नॉलेज इज द ट्रेजर, बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। चाबी नहीं बनाओगे ना तो वो सिर्फ एक पड़ा हुआ खजाना ही बन के रह जाएगा, जिसको आप कभी, कहते हैं ना, उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो I'm emphasizing upon this because I want to make sure that every single person who is coming is practicing. Okay? and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. The magic formula. Deliberately think and say the magic words, thank you. The more you deliberately think and say the magic words, thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude is a feeling. So the ultimate aim is practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can. Because it is the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes,
how easy it is to incorporate gratitude in your daily life. And when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. ठीक है, ये अभी लुकिंग एट द टाइम मैं इसको अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हम आराम से अगले 30 दिन इसके ऊपर करेंगे. बट हाँ, अल्टीमेटली यही है कि भैया जितना फील करोगे उतने ज्यादा मैजिक्स आएंगे. जितना लेकिन इफ यू प्रैक्टिस अ लिटिल मैजिक्स विल कम. इफ यू प्रैक्टिस अ lot of magics will come. So it's all about you and your practice. Okay. A magical book. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter the words, but to live by them. These words are from 35th President of the United States, John F. Kennedy. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desire and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. You will be captivated while you read this life-changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate yourself and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. ठीक है. So this is how the book is designed. इसने आपको बता दिया. आपको असाइनमेंट्स करने में बहुत मजा आएगा. बट हाँ, असाइनमेंट्स कर लेना. एंड क्या क्या चीजें जो हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी कंटेंट्स में, everything will be covered. And you will really see how easy it is to make all your dreams come true. चलो. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true, and you will see the circumstances of your life magically change. The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, dissolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. इसने आपको बता दिया है. सबसे पहले हम ये आपको अभी मोटा मोटा बुक कैसे डिजाइन्ड है उसके बारे में बता रहे हैं ताकि आपको अगले जो आप प्रैक्टिसेस करोगे उसमें कोई मुश्किल ना आए. ठीक है. तो यस ने आपको बता दिया है. पहले हम अपने पास्ट का ग्रैटिट्यूड करेंगे, जो अभी प्रेजेंट में है करेंगे. फिर आप अपने सपनों के लिए कैसे अट्रैक्ट करना है उसके लिए करोगे. एंड देन एंड में अब आपने क्या होता है ना, अपना तो सब कुछ फुलफिल कर ही लिया, मगर कभी कभार मन नहीं करता यार मेरे को इतना कुछ मिल गया, मेरे दोस्त को भी मिल जाए, मेरी मम्मी को भी मिल जाए, मेरे इस रिश्तेदार को भी मिल जाए, मेरे इसको भी मिल जाए, है ना. सड़क पे आपने किसी हेल्पलेस को देखा, यार इसके साथ भी अच्छा हो जाए, है ना. तो लास्ट के 6 में अब आपके पास इतनी हायर पावर हो जाएगी कि आप उनके लिए भी कर पाओ. अभी आपको ये सिर्फ बता रहे हैं कि हाउ द बुक इज डिजाइन्ड. You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life. Whether it's work days, weekends, holidays, or vacations,
Gratitude is portable. You take it with you wherever you go. And then wherever you go, the magic happens. If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. If you don't want to follow the 28 magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life that you want to change or improve, and you could do that practice 3 days in a row or every day. So this is not for us because हम लोग इसको daily ही करेंगे. तो इसने आपको अभी book के बारे में बताया है. ये सब चीजें हमने this is how the book is designed. Then उसके बाद the next section is not for us as it talks about after the next 28 days. वो हम तब करेंगे जब खत्म हो जाएगा. अब हम आते हैं बहुत important section पे before we complete, which will be what are your dreams? Because as you incorporate gratitude in your days, they will be nothing short of spectacular. Yeah, this is a very, very important section. What are your dreams? Now, this is a very, very important section, and I want each and every one of you जो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि देखो आप अगले अपने 30 दिन लगाओगे, किस चीज के लिए लगाओगे? इसी चीज के लिए लगाओगे, है ना? कि what are your dreams? अगर आप एक क्लास में आओगे, प्रैक्टिसेस करोगे, है ना? तो वो ट्रेजर क्या है जो आप पाना चाहते हो, आपके सपने क्या है जो आप सच करना चाहते हो. तो इसको हम ध्यान से करेंगे और ये आपकी आज की असाइनमेंट है टू राइट डाउन व्हाट आर योर ड्रीम्स. चलो. Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want and not how you're going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. And कल जब हम मिलेंगे तो मैं आप सबसे पहले शेयरिंग दूंगी कि आपने अपने सपने क्या क्या लिखे. So all the students who are sitting and listening, आप अपने मैम को पहले बता देना कि आप में से कौन कौन शेयर करना चाहेगा, ठीक है? ताकि फिर मुझे भी पता होगा आपके क्या क्या सपने, और फिर जो मैं आगे के सेशंस लूंगी वो उस कॉन्टेक्स्ट से लूंगी, है ना? कि आपके चलो ये सपने हैं तो चलो इसको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो आप सब लोग आज अपनी रिटन लिस्ट बनाएंगे. कैसे लिखना है? We might exceed by 2-3 minutes. Would that be okay? That's fine. Thank you. Thank you so much. ठीक है. So आप सबने अपने सपनों की लिस्ट बनानी है. कैसे लिखना है? चलो पढ़ते हैं. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. हाँ, तो जैसे अभी यहाँ पे सेशन में 12th क्लास के बच्चे भी बैठे हैं जो अभी अपना बोर्ड्स देंगे, तो मे भी हो सकता है आपका सपना अपने कॉलेज को लेके, एडमिशंस को लेके कुछ हो. तो अपने सपने में देखो यार कि अच्छा ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ कोर्स डू यू सी योरसेल्फ डूइंग, या फिर अगर आपके लिए कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो व्हाट काइंड ऑफ अ कॉलेज डू यू सी योरसेल्फ इन. आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हो, व्हाट इज योर ड्रीम इन दैट एरिया, राइट दैट डाउन. आप में से हो सकता है कोई बाहर अप्लाई कर रहा है, लाइक टुडे ओनली दिस लेडी शेयर्ड, लेडी क्या कॉलेज स्टूडेंट थी,
उसको लंदन जाना था पढ़ने के लिए, एंड उसके जो जो ब्रेकडाउन आए, बट शी रोट डाउन लंदन में इस कॉलेज में जाना है, ये कोर्स करना है, इतने साल का कोर्स है, इस हॉस्टल में मैं रहना। रिसर्च करो यार, आपका सपना है ना। आप अगर आप सेकंड क्लास में हो, आपका सपना है कि मुझे, सपना तो ये भी हो सकता है कि मैं फर्स्ट सीट पे बैठूंगा और मैम मेरी तारीफें करेंगी। सपना तो कुछ भी हो सकता है ना। सपना तो ये भी हो सकता है कि अरे वाह, मैं बास्केटबॉल खेलने गया था और मैंने 5 शॉट्स मारे, 5 के 5 कन्वर्ट हो गए, मजा आ गया। राइट डाउन व्हाट इज योर ड्रीम क्लियरली, है ना। आज का असाइनमेंट आपका आपके सपनों के बारे में। If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी बच्चे हो, आपके मम्मी पापा आपके पैसे देते हैं, हो सकता है आपका सपना है कि मुझे इस ब्रांड की ये ड्रेस खरीदनी है, या मुझे PS5 खरीदनी है, या मुझे ये फोन खरीदना है, या मुझे यहाँ घूमने जाना है। राइट डाउन, किस चीज के लिए चाहिए, कितनी चाहिए, प्रिंटर चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए लिखो तो सही। If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. है ना, कभी कभार हो सकता है आपको लगता है यार मेरी लाइफ में वैसे फ्रेंड्स नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ, हो सकता है ना। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई फ्रेंड चाहिए तो कैसा चाहिए कि चलो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो, हेल्पफुल हो, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हो सकता है आपका मम्मी के साथ अच्छा नहीं है रिलेशनशिप, आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हो, तो कैसा चाहते हो मम्मी के साथ रिलेशनशिप, या पापा के साथ, या मैम के साथ, या किसी कोच के साथ। राइट इट डाउन। If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. Great. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone for being in today's session. And आज हमारी जो assignment रहेगी will be to make a written list of your dreams. So yes, thank you everyone. And कल we will be taking sharings. ठीक है? Before we start the chapter, आप सब लोग अपने ड्रीम्स शेयर करोगे कि आप क्या करना चाहते हो और इसको जितना स्पेसिफिकली लिख सके. So thank you everyone. Thank you so much for being in today's session. जिसने सीक्रेट मूवी नहीं देखी आज देख लेना, कंप्लीट कर लेना. कल उसके बारे में भी मैं आपसे सरप्राइज टेस्ट लूंगी, है ना. तो थैंक यू एवरीवन. गरिमा जी, एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर वी कंप्लीट? Thank you to Annie. Thank you so much. Thank you everyone. Bye.